वेलकम फ्रेंड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ESXi सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ESXi सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो पहले मैं अपने ESXi सर्वर को ऑन कर देता हूँ। ESXi ऑन हो रहा है। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम जाएंगे F2 कस्टमाइज। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम सेट किया है पासवर्ड यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में चेंज पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क मैनेजमेंट सेलेक्ट दिस। यहाँ पे आप नेटवर्क एडेप्टर चेक कर सकते हैं अपना। मेरे पास एक ही नेटवर्क एडेप्टर है और एक ही कनेक्टेड है। इसके वीरेन अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास वीरेन यूज करें तो आप वीरेन का ID डालिए। इसको स्किप कर रहा हूँ। IP वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे IP देने के लिए space for select the option. I change this IP. Detail 167 1.1 and your gateway. Set your IP subnet mask and your gateway and press enter. DNS, if you have DNS server, you can change your DNS, primary DNS, secondary DNS by the select option. I don't want to change anything. This option, this dust is asking for yes. Now I test my everything is working. You can see it's coming okay. If fault if comes fail, so anything is problem. So it's configured finish. Now it's ready for production and ready for configuration. vCenter server. Hope you like this video. Thanks for watching. If you like, comment, share, subscribe.